Okay. This is the normal structure of a neuron. ठीक है, whether it's a sensory neuron, motor neuron, interconnecting neuron. ठीक है, this is just a general structure. जब हम मोटर न्यूरॉन की बात करते हैं, मोटर न्यूरॉन वैसे माइक्रोस्कोपिकली वेरी वेरी स्मॉल, बट सम मोटर न्यूरॉन्स आर 1 मीटर इन लेंथ. तो वो जो 1 मीटर लेंथ है, दैट लेंथ इज यूजुअली ऑफ एक्सॉन. एक्सॉन की लेंथ जो है वो लंबी हो जाती है ना, दिस लेंथ बिकम्स बिग, है ना, ये एक्सटेंड कर सकती है ये लेंथ. ठीक है, इसके पार्ट्स देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज योर डेंड्राइट. ठीक है, तो डेंड्राइट जो है बेटा ये आपका हैवीली ब्रांच्ड है, एंड सिनेप्सिस जब होता है तो डेंड्राइट जब वो रिसीव कर रहे होते हैं सिग्नल. ठीक है, सिनेप्सिस का मतलब है यहाँ पर जो एक्सचेंज हो रहा है. ठीक है, दिस इन एक्सचेंज साइट इज कॉल्ड एज सिनेप्टिक स्पेस. और यहाँ पर जो है, जो आपका एक्सचेंज है वो आपका ये आपका आयंस की फॉर्म में जो है आपका सिग्नल जो है दैट इज गेटिंग कैरीड. ठीक है, तो इनको हम सिग्नल्स, जो आयंस की फॉर्म में जो सिग्नल्स हैं इनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं. तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स यूजुअली सोडियम पोटेशियम के आयंस की फॉर्म में रहते हैं, एंड इफ न्यूरोट्रांसमीटर्स आर कैरिंग द सिग्नल्स अहेड. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है आपका एक पर्टिकुलर न्यूरॉन है which is carrying the signal, and this signal is being transmitted to the dendrite of another neuron. ठीक है, तो डेंड्राइट जो है वो बेसिकली दे आर रिसीविंग द सिग्नल. ठीक है ना, न्यूरॉन से जो सिग्नल है दैट्स गेटिंग कैरिड इन एक्सॉन एंड एंडिंग अप एट द डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन. What is the function of dendrite? Dendrite is heavily branched and it receives message from other neurons. ठीक है, you can write this down. Dendrite heavily branched and receive signal from other neurons via synapses. Next is your cell body. Cell body is also called as soma. ठीक है, सो ऑर्गेनल्स के नाम पर जो है बेटा इसके अंदर जो यूजुअली यू हैव गॉट ओनली राइबोसोम्स आर देयर टू मेक प्रोटीन्स. ठीक है, न्यूक्लियस तो है ही हमारे पास, साथ में ऑर्गेनल्स में राइबोसोम्स आर देयर. ठीक है, बाकी ऑर्गेनल्स भी होते हैं, आर गोल्जी ऑपरेटर्स, बट फंक्शन जो है वो मेनली राइबोसोम का ही रहता है. ठीक है, मोस्टली जो आपका माइटोकॉन्ड्रियाज हैं दोज आर इन वेरी फ्यू नंबर्स. ठीक है, जो आपका बाकी जो सेल्स हैं दोज आर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन. दे आर हेल्पिंग द न्यूरॉन्स टू कैरी द सिग्नल. ठीक है, ये जो सिग्नल है दैट सिग्नल इज कैरिंग बाय एक्सॉन. ठीक है, दिस एक्सॉन इज long tail carrying signal or message to terminal. Axon जो है बेटा दैट्स covered by Schwann cells, और Schwann cells जो हैं those are very specific cells जो कि fold हो जाते हैं axon के अराउंड. एंड ये जो folded Schwann cells हैं they form myelin sheath. ये माइलिन शीट अगर नहीं होगी तो आपका जो सिग्नल है, जो न्यूरॉन का सिग्नल है दैट विल गेट लॉस्ट. ठीक है,
not lost, but full signal will not be transmitted. The person will face neurological problems. So myelin sheath जो है, it covers axon and helps in signal conduction. ठीक है, वो सिग्नल पैसेज में जो है उसकी हेल्प कर रहा है. और ये जो माइलिन शील्ड के बीच में जो स्पेस है, दोज आर दैट इज कॉल्ड एज नोड ऑफ वेनगी. This is space between myelin sheath. सर माइलिन शीट का थोड़ा सा दिखा सकते हो क्या, वो कट ऑफ हो गया है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. सर सेल बॉडी में जो ऑर्गन्स होते थे उनका नाम बताना वापस. बेटा सेल बॉडी में इट्स यूजुअली राइबोसोम्स आर देयर. मेन फंक्शन इज ऑफ राइबोसोम्स. बाकी जो ऑर्गेनेल्स हैं वो ऑलमोस्ट, मतलब दोज आर वेरी लेस और ऑलमोस्ट एब्सेंट. ओके सर. ठीक है, आगे करें. यस सर. तो बेटा ये जो एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, इनके एंड पर आपका दूसरे डेंड्राइट्स होंगे, या फिर दे आर एंडिंग इट एट स्पाइनल कॉर्ड. और यहाँ पर जो स्पेस है ना, at which this exchange takes place, this space is called as synapse. Schwann cell. बेटा जो Schwann cell है, these are the cells which makes up myelin sheath, है ना. मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ. So ये वाला पार्ट है ना, ये जो myelin sheath है, that's what is covering the axon. Axon को ये cover कर रहे हैं. So these are specialized cells whose function is to provide the insulation to the axon, so that जो signal है during transmission it will not get lost. ठीक है. अरे स्वान तो एक साइंटिस्ट का भी नाम है ना, जिसने सेल थ्योरी बनाई. हाँ, Sheldon and Schwann. Okay, it is, I'm not sure whether the same Schwann or different Schwann. ठीक है, तो आपका जो बेटा जो पूरा जो नर्वस सिस्टम है ना, नर्वस टिश्यूज इज मेड अप ऑफ टू सेल्स.
those two cells are neurons and glial cells. These glial cells are small cells, but they perform all different functions and support neuron cells. Neuron cells are like masters, glial cells are like slaves. Glial cells function is to do all the functions of neuron cells and including जैसे आपका जो कैपिलरीज है जो ब्रेन में जाती हैं, ठीक है, तो आप अगर देखेंगे तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या होता है, प्लाज्मा जो है आपका, दैट प्लाज्मा गोज आउट, जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है ना बेटा, ये आपका कैपिलरीज है, ठीक है, और यहाँ पर जो देयर आर सेल्स आर देयर, बिटवीन द सेल्स देयर इज अ इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज देयर, है ना, दिस इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज देयर यहाँ पर। तो कैपिलरीज में से जो प्लाज्मा है दैट गोज आउट and it mixes, it takes out everything, CO2, glucose, proteins, nutrients, everything it takes out, and then some amount of fluid, then it goes back into the capillaries. In case of brain में ये capillaries है ना, brain also need oxygen to survive. तो brain के केस में लेकिन जो glial cells हैं, वो glial cells they cover full capillaries, वो capillaries को भी cover करके रखते हैं, and they don't allow everything to go out from the blood. सारी चीजों को अलाउड नहीं करते हैं कि सारी चीजें यहाँ पर आ जाए, एज अ प्रिवेंटिव मेजर, ठीक है, वरना जो ब्रेन है वो भी पूरा जो है इट विल गेट अफेक्टेड बाय जनरल बैक्टीरियाज और वायरसेस, ठीक है ना। तो यूजुअली आपने देखा होगा कोई अगर इन्फेक्शन होता है तो फुल बॉडी में वो इन्फेक्शन इज देयर, बट बहुत ही कम इन्फेक्शन हैं जो ब्रेन पर इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ब्रेन इज प्रोटेक्टेड एंड सर्व्ड बाय ग्लायल सेल्स। ये ग्लायल सेल्स हैं, ये डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं which are providing covering, shield and doing respiration, lot of other jobs for the neuron cells, ठीक है। तो Schwann cells are one of the glial cells. Agreed? ठीक है ना, ये synapses I have told you already. तो that's it, बस इतना सा क्वेश्चन है हमारा न्यूरॉन सेल से रिलेटेड। आगे बढ़े, ठीक है। हाँ, एक जनरल ओवरव्यू देख लेते हैं, एंड आई थिंक एनिमल सेल्स हमारा नेक्स्ट क्लास में जो है वो विल कंप्लीट इट, ठीक है। मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ अभी जो हमारे पास बचा हुआ है। तो टू टाइप ऑफ सेल्स टिश्यूज आर लेफ्ट, वन इज मस्कुलर टिश्यूज दैट विल टेक नेक्स्ट, एंड लास्ट वन इज द कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। मस्कुलर टिश्यूज में muscular tissues are of three types, that is skeletal, cardiac and smooth muscles, ठीक है। skeletal muscles and cardiac muscles बहुत सिमिलैरिटी है इनकी आपस में, बट कार्डियक मसल्स में बहुत सारी मतलब few different changes are there, and that's why cardiac muscles are kept separately. And second type of tissues which are left is connective tissues. कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो ब्रॉडली तीन कैटेगरीज में बेटा, वन इज प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज, ये हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं दोज आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज लूज, अनदर इज डेंस। डेंस वाले जो हैं वो दो हैं हमारे, वन इज लिगामेंट, अनदर इज टेंडन। लूज वाले जो हैं हमारे तीन हैं, that is areolar and adipose, ठीक है। थर्ड वाला जो है उसको रहने देते हैं, that's not in the syllabus, but I'll tell you about it, that is reticular, reticular। प्रॉपर कनेक्टिव है, उसके बाद आपका जो है फ्लूइड टिश्यूज हैं, फ्लूइड टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स,
दैट इज ब्लड एंड लिम्फ। इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे क्योंकि आपका क्लास 10th में वापस आएगा ब्लड एंड लिम्फ। एंड द लास्ट वन इन दिस इज स्केलेटल। स्केलेटल टिश्यू जो है, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, दैट्स मेड अप ऑफ बोन एंड कार्टिलेजेस। ठीक है, बोन्स इज योर ऑस्टियोसाइट्स and cartilages are made up of chondrocytes. ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास हमारी फ्राइडे को होगी, तो विल कीप मैथ्स जो है वो थोड़ा सा कम रखेंगे, साइंस ज्यादा रखेंगे। पहले साइंस स्टार्ट करेंगे फिर मैथ्स करेंगे। चलो जी, लेट्स एंड द सेशन हियर। सर प्लीज शेड्यूल भेज देना सर इस वीक। अच्छा हाँ, मैं शेड्यूल बनाकर भेज रहा हूँ। ओके, बाय बाय।